So hello dear students, myself Ashish Kumar Sahu, your IT sir. आज क्लास में डिस्कशन करिबा IP address विषय रे. Internet application रा IP address is one of the most important long question जोटा बहुत काउंसिल एग्जाम रे आसीची. IP address केमती असाइन करा जाए, IP address केते प्रकार अछि, केमिति IP address में पढ़ि पारे ए सब विषय डिटेल में क्लास डिस्कशन करिबा. So let us start. What is IP address? इंटरनेट रे प्रत्येक डिवाइस जोटा कनेक्शन होची सेटा हमरो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, पीसीज हो, स्मार्टफोन हो, जो डिवाइस भी हो, जोटा भी कनेक्शन होची तार गोटे यूनिक एड्रेस असाइन करा जाय ताको आइडेंटिफाई करिया पे. इंटरनेट रे गोटे कंप्यूटर बा किछो डिवाइस कनेक्शन है ताको यूनिकली आइडेंटिफाई करिया पे गोटे यूनिक एड्रेस दिया जायछि. दैट एड्रेस इज नोन एज आईपी एड्रेस. So what is IP address? It is used to uniquely identify a device. The device may be a computer, may be a smartphone, anything else, which is connected to internet, and it is basically assigned by the ISP, Internet Service Provider. ISP is a company which provides internet services to the users or organization or institutions. So ISP जो internet service provide करूची, ISP ही assign करूची IP address गोटे computer को. IP address mainly दी प्रकार अछि IPv4, IPv6. IPv4 that is protocol version 4 and internet protocol version 6. V4 और V6 difference एतिकी जे एथिरे 32 bits यूज करा जाय एड्रेसिंग पई, 32 bits एड्रेसिंग यूज करा जाय, and in IPv6 128 bits यूज करा जाय एड्रेसिंग पई. जेतेले कंप्यूटर actually IPv4 आगो यूज करा जाय लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर. IPv4 यूज करके से कंप्यूटर्स यूज करा होतला ताको एड्रेस असाइन कराला. जेते कंप्यूटर संख्या बढ़ियला, इंटरनेट यूजर संख्या बढ़ियला, देन ग्रेजुअली IPv6 यूज कराला. आईपी एड्रेस को हम दी वे रिप्रेजेंट कर पाइबा. वन इज बाइनरी फॉर्म, वन इज डॉटेड डेसिमल फॉर्म. जनरली हम एटा देखु डॉटेड डेसिमल फॉर्म टा. व्हाट इज बाइनरी फॉर्म? बाइनरी फॉर्म मींस इन दिस नोटेशन और इन दिस फॉर्म आईपी एड्रेस को 32 बिट्स से रिप्रेजेंट कर जाए. It is represented by 32 bits. जो IPv4 32 bits represent कर जोतरे प्रत्येक 8टा bit separated by dot द्वारा. Each 8 bit is separated by dots. So represented by 32 bits where each 8 bits are separated by dots. For example, 1100 1100.1010 1001.1001.4040. So एठी रिप्रेजेंट कराओ देखो टोटल 32 बिट्स अछि. So this is IPv4 which consists of 32 bits and each 8 bit is separated by dot. You can give any example, any combination of 10 separated by 8 bits and dot consisting of 32 bits is considered as binary form notation कहा जाय. But आगोटे जे देखंतु एटा मन रखिया हमने बहुत कष्ट होय. This is difficult to remember. That's why डॉटेड डेसिमल फॉर्म दा यूज कर. डॉटेड डेसिमल फॉर्म कोन होची? डेसिमल फॉर्म रे, न्यूमेरिकल फॉर्म रे हमें आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करले. न्यूमेरिकल फॉर्म में ए टाइप 168.98.0.56 टाइप. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग डेसिमल नंबर्स रे और नंबर रे रिप्रेजेंट करा होची. एंड द रेंज इज 0 to 255. हाउ द रेंज कम्स? रेंज केमती आछो देखो. एडी जो बाइनरी नंबर अछि, the binary number of maximum value केतला होबो जतला 8टा 1 रहइबो. 8 number of 1 8 number of octet रहले 8टा maximum value आसो. जदि 8टा 0 रहइबो minimum value आसो. जदि 8टा 0 रहउची ताले तार डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करले तार वैल्यू आसो 0. जदि 8टा 1 रहउची डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करले तार वैल्यू आसो केते 255. सो या रेंज होची 0 to 255. सो जहां भी एड्रेस हमें लिखिबा चारटा दशमिक जहाँ भी एड्रेस लिखिबा डेसिमल पॉइंट रे से रेंज ता सब 0 ରୁ 255 भीतर रहया दरकार. मोड एड्रेस लिखिबी 240.260.300.500 एमती एड्रेस हबो नाही बिकॉज़ द एड्रेस मैक्सिमम रेंज होची 255. सो जहाँ भी एड्रेस लिखिया से एड्रेस ता रेंज हबो 0 to 255. फॉर एग्जांपल 168.98.0.56. सो दिस इज द आईपी एड्रेस जो 0 to 255 भीतर होची. ओके, both are same, only the representation in binary form and representation in dotted decimal form. IP address
रो मेनली दीटा पार्ट अछि हम जो चारटा पार्ट देखिले चारटा अछि चारटा ऑक्टेट फॉर्म अछि ताको दी भाग विभक्त कराइछि गोटेला नेट आईडी गोटे होस्ट आईडी नेट आईडी कोन नेट आईडी आइडेंटिफाइज द नेटवर्क इट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क address and host id identifies the computer connected to the network net id identifies the network address and host id identifies the computer which is connected to a network for example amo college कोटे IP address assign हेछि ISP तरफ like this 168.98.0.56 जदि एई तीनटा नेट आईडी एटा होस्ट आईडी हे त माने 168.98.0 हला हमो कॉलेज रो नेट एड्रेस 56 हला कॉलेज रो होस्ट एड्रेस मींस 56 is the computer address next 57 58 एंड ऐसे 168.98.0.57 168.98.0.58 ए टाइप रो तार होस्ट एड्रेस बडी बडी तापरे जिवो ओके So I'm basically declare net ID, host ID, net ID network address and host ID represents the host address of the computer connected to the network. तापर IP classification, IP address केमिति assign करा जाए? How IP address is assigned using classes? Basically there are 5 classes, class A, B, C, D, E. पांचटा class अछि and the class केमिति create करा जाए? It is based on the fast octet. Fast octet 168 fast octet अछि. So fast octet ऊपर बेस कराई दिया है fast octet रो रेंज जा रहइबो से अनुसार IP address क्रिएट होबो जदि रेंज ता 0 ରୁ 127 रहला सेटा क्लास A आसीबो जदि 128 ରୁ 191 आसीबो सेटा क्लास B 192 ରୁ 223 आसला क्लास C 224 ରୁ 239 क्लास D 240 ରୁ 255 क्लास E बेसिकली क्लास A B C हमें जनरल यूजर हमें यूज करछु क्लास A B and C those are used by the general users individual organization institutes हमें समते यूज करछु क्लास D and E has no net id host id क्लास D यूज कर जाए मल्टीकास्टिंग पे यूज कर जाए क्लास D is used for multicasting and class E is used for scientific research पे यूज करा होची हमें गोटे क्लास देखिबा से क्लास पिसरे हम बुझिया चाहिबा हाउ द क्लास इज क्रिएटेड गोटे क्लास रो प्रॉपर्टी केमति रहउची जदि क्लास A ने भी देखो क्लास A रे मु कहितली IP address consists of net ID and host ID क्लास A रे गोटे नेटवर्क ID टोटल चारटा पार्ट अछि 1 2 3 4 चारटा पार्ट अछि IP address रो क्लास A रे गोटे नेट ID तीनटा होस्ट ID मान फास्ट ता रहइबो नेट ID तीनटा होस्ट ID रहइबो सो दिस इज लार्जर नेटवर्क जोतिर बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्शन हेइ परियो So class A consists of large number of computers, one net ID and 3 host ID. One net ID means 2 to the power 7 network addresses. गोटे host ID रे जेतो 8 bit रोची गोटे octet रे so 2 to the power 8 number of computers can be connected. So 2 to the power 8 into 3 2 to the power 24 2 to the power 8 2 to the power 8 2 to the power 2 to the power 24 रोची. So net ID पे 2 to the power 7 host ID पे 2 to the power 8. So now one net ID connection by 2 to the power 7 net addresses are there and 3 host ID by 2 to the power 24 host addresses are there. Total कितना हला 7 and 24 is 31. So total 2 to the power 31 devices are available in class A type. Class A type ro 2 to the power 31 computers are available, which is one half of the total computers is of class A type. What is the computer achi? One half of the total computers is of class A type and it is mainly used in large organizations. Jodi class B naba dita net id dita host id 2 net id by 2 to the power 14 network addresses 2 host id by 2 to the power 16 host addresses so total ala 2 to the power 30 computers can be connected total 2 to the 30 devices can be connected in class A and it is 1/4 of the total computers in the world. Total jete computer अछि तार 1/4 हला class B type रो and it is used in the medium size organizations. Class C नेले तीनटा net ID one host ID net ID by 2 to the 7 so 2 to the 21 network addresses host ID 2 to the 8 so 2 to the 8 host addresses total हला 21 and 8 to the 29 computers or devices can be connected in class C type. So it is 1/8 of the total computers in the world. Total world ro 1/8 computer rochi and it is used in the small organization. After the difference also बुझिया चाहिबा so class A 1 net ID 3 host ID 2 net ID 2 host ID 3 net ID 1 host ID 1 2 3 3 2 1 एंती मन रखिबा 1 net ID by 2 to the power 7 so 2 to the power 7 network address
2 to the power 8 या पे होस्ट आईडी सो तीनटा अछि माने 2 to the power 24 एटी दीटा अछि 7 7 14 दीटा अछि 8 8 16 तीनटा अछि 3 7 21 गोटे अछि 8 सो टोटल होची 24 7 हला 31 16 40 हला 30 21 8 hela 29. This is one half of the total computers in the total world. This is 1/4 of the total computers in the world. This is 1/8 of the total computers in the world. And class A is used in large organizations like you can go for Microsoft, you can go for IBM, you can go for Google. So the class A type use kara jaye. Class B it is used in the small medium sized organizations like TCS, Infosys. Class C is used in the small organizations like our college, institute, organization, anything else. जदि हम एग्जांपल नबा 130.168.92.658 देखो यार फास्ट ऑक्टेट ता अछि केते 130 सो 130 मींस रेंज केते अछि एटा 0 टू 127 128 टू 191 सो 130 ता अछि ए रेंज रा अछि ए रेंज रा एटा क्लास बी हो सो दिस इज ए क्लास बी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस क्लास तमु जदि शॉर्ट क्वेश्चन आसे जे ए एग्जांपल टा को क्लास रो तमु ए रेंज ता मन रखे पड़ो जदि 127 भीतर आसला क्लास ए 128 टू 191 से क्लास बी 192 टू 223 आसले क्लास सी 224 टू 239 क्लास डी एंड 240 टू 255 इज क्लास ई सो दिस इज ए क्लास बी टाइप कारण 130 अछि 130 ला ए रेंज रा अछि अच्छा क्लास बी मींस क्लास बी रे दीटा नेट आईडी दीटा होस्ट आईडी सो 130 एंड 168 ए दीटा ला नेट आईडी 92 58 ए दीटा ला होस्ट आईडी so this is the detail about the classification of the classes in the IP address generally IP address दी प्रकार अजन होची गोटेला static IP address को dynamic IP address static means which does not change जोटा change हबो नाही okay which does not change for a particular device एबे मो कंप्यूटर IP address अछि एटा परे भी से अछि वर्षे पर भी से अछि जेपन द ISP तो चेंज करनी द IP address remains constant change हेई नाही so that is static IP address dynamic means which changes जोटा चेंज होची from time to time जो IP address ता चेंज होची चेंज काई होची जेतु IP address is very limited जो IP address तुमको ए टाइम रे असाइन हे जे तमे यूज करूछो फॉर एग्जांपल मो मोबाइल जो IP address अछि that IP address is dynamic in nature से IP address ता मो बे यूज करूची किछि समय पर मो यूज बंद कर देली से IP address आउ जण को असाइन हे जो सी तापर सेटा यूज करिवो so देखिए mobile IP address is dynamic in nature जोटा की change होची so the IP address which changes is called dynamic and which does not change is called static so this is the total overview of the IP address का कोआ जाय uniquely identify करा होची IPv4 and IPv6 मन रखियो 32 bits 128 bits data form में तो represent करियो one is binary form one is dotted decimal form and it is easy to remember the dotted decimal form the range is 20 to 255 it has two pairs net ID and host ID and IP classification are of 5 classes out of these 3 classes are used by the users class D and E are reserved for special purposes like class D is reserved for multicasting purpose and class E IP address are used for reserved for the science and research line data use kara hochi and this is the detail of the classification of IP address how it is assigned example deli and static and dynamic IP addresses का होचे बुझिले so in this class we have learned about the detail of IP address this is one of the most important long question for your council exam या तो बहुत short question भी आसे like IPv4 consists of how many bits classes और आसे okay examples आसे so you can go through this video जाएगी तमे detail बुझी परिबो if you have any suggestion any comment you can write down in comment box thanks very much for the class I hope you have enjoyed the class a lot if you have any doubt or any suggestion you can give me in the comment box thanks a lot I hope you have enjoyed in the next class we will go for the domain name system or DNS okay thanks a lot again